हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न वेल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम क्वांटिटेटिव मेथड फॉर बिजनेस का चैप्टर नंबर 1 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इन अ फ्रूट शॉप 50% ऑफ द फ्रूट्स आर मैंगोज। एक फ्रूट शॉप है जिसमें 50% फ्रूट क्या है? मैंगोज हैं। 30% ऑरेंजेस एंड 20% एप्पल है। 2% of the mangoes, 1% of the oranges, and 0.5% of the apples are bad. One of the three different fruits was taken at a random from the shop and was found to be bad. What is the probability that the fruits taken was an orange? This is a conditional probability problem that we can solve by using Bayes theorem. Step number 1 is to find the number of each unit. To find the number of each unit, the total mangoes are 50%, oranges are 30%, and apple 20%. 50% of 1000 is 500. Oranges, 30% of 1000 is 300. Apples, 20% of 1000 is 200. By adding 500, 300, and 200, the total fruits were 1000 total fruits. Step number 2 is to find the number of bad fruits in each category. अब हमने स्टेप नंबर 1 में क्या फाइंड किया था? नंबर ऑफ ईच यूनिट कि टोटल यूनिट्स है कितने हैं। अब जितनी यूनिट्स हैं स्टेप नंबर 2 में हम फाइंड करेंगे कि कितने फ्रूट जो हैं वो खराब हैं। ईच कैटेगरीज में कितने फ्रूट खराब हैं वो फाइंड करेंगे स्टेप नंबर 2 में। तो चलिए स्टेप नंबर 2 देखते हैं। सो बैड मैंगोज आर 2%. As in question, the percent of bad fruits are given. Mangoes 2%, oranges 1%, and bad apples were 0.5%. So 2% of 500 जो हमने अभी निकाला था, 2% of 500 is 0.02 into 500. That was 10 bad mangoes. Mangoes totally have 10 bad mangoes. Bad oranges कितने हैं? 1% of 300. That is 0.01 into 300. That is 3 bad oranges. Total oranges 300 में से कितने bad oranges हैं? Only 3. An apple, that is 0.5% of 200. टोटल एप्पल कितने थे? 200. उसका 0.5% जो है 0.005 into 200, that is only one bad apple. So हमें क्वेश्चन में पूछा गया था what is the probability that the fruit taken was an orange. स्टेप नंबर 3 है हमारा find the total number of bad fruits. अब 10, 3 and 1 इनको ऐड करेंगे, दैट इज 14 बैड फ्रूट्स। टोटल कितने हैं? 1000 फ्रूट में से 14 बैड फ्रूट्स हैं। स्टेप नंबर 4 कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी। द क्वेश्चन आस्क इफ यू पिक अ फ्रूट एंड दैट इज अ बैड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन ऑरेंज? ऑरेंज फ्रूट कितने थे हमारे खराब? 3. तो this is the number of bad fruits divided by the total bad fruits. ऑरेंजेस कितने खराब थे हमारे? 3. उसको डिवाइड कर देंगे टोटल बैड फ्रूट्स, दैट इज 14. 3 divided by 14. The probability that the bad fruit was an orange is 3 out of 14. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें और मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली विद लर्न वेल।